We were doing GMP guidelines. I have already started the topic, right? Yes, ma'am. Currently in this meeting, it's showing only 19 students. What about others? Why the others have not joined? This is section B, right? Yes, ma'am. So less attendance in the class. I think we were on the slide. On this slide, packaging materials and labeling. Does anybody remember? Ma'am, this we have covered. Packaging This material and labeling. okay. Okay. I think from here we have to start. Yes, ma'am. Sanitation and hygiene. Okay. Let us wait for 1 minute more. Let other students also join. Then I'll start. Okay, we'll start the class. So I'll ask someone to read. Is Dolly Kumari there? No, Dolly. Ankita Kumari. Ankita, are you there? Yes, ma'am. Okay. Just open your webcam. Yes. Can you see the slides? Yes, ma'am. Good manufacturing practice. Yes, yes, yes. So, good manufacturing practice for herbal medicine, Hmm. sanitation, and hygiene. During the course of harvesting and processing, herbal products that may be especially prone to microbiological contamination are produced. To Hmm. avoid the alteration and reduce the contamination in general, a high level of the sanitation and hygiene during the manufacture is necessary. Hmm. Okay, So, read. Water supply. supplied to the manufacturing unit should be monitored and, if necessary, treated appropriately to ensure the consistency of quality. B. Hmm. Waste from the manufacturing unit should be disposed of regular so as to maintain a high standard of hygiene in the manufacturing area. And Hmm. C is clearly marked waste bin Waste. should be available, emitted and clean as needed, but at least daily. Okay. Okay. So in this, the sanitation and hygiene, although we have done about these, what should be the sanitation and hygiene in the during the GAP guidelines. So you can just see the GAP guidelines regarding the personal hygiene. So both all the guidelines are basically the same. So the thing that has to be that is added in here
is that you have to just take care that during your harvesting and processing, your herbal materials or the herbal products that are containing the high amount of moisture, they can be prone to the microbiological contamination. So you have to maintain a very high degree or level of cleanliness and hygiene in your production area, and whatever the water supply you are using for in the manufacturing unit, it should be microbiologically safe. That is, it should not have any fecal contamination or any type of the coliform bacteria. So the water quality has to be monitored regularly, and if it is found to be not appropriate, then it should be treated with either chemical or other means, so that it should be of good quality. Okay, and the waste from the manufacturing unit which is being generated daily, so it should be disposed of regularly, and there should be the clearly marked dustbins. These are the waste bins are actually the dustbins, so they should be emptied and cleaned daily at least, so as to maintain the cleanliness in the production or the manufacturing units. Okay, now the second point is regarding the qualification and validation. Okay, now I'll ask someone else to read. Harshita Kothari is there. Harshita Kothari. Ayushi Singh. Yes, ma'am. Ayushi. Yes, ma'am. Okay, just open your webcam and read. Qualification and validation. Hmm. Okay. So, qualification of critical equipment and process validation are particularly important in the production of herbal medicines with unknown therapeutically active constituents. In this case, the reproducibility of the production process is the main means for ensuring consistency of quality, efficacy, and safety between batches. The written procedure should specify critical process steps and factors such as extraction time, temperature, and solvent purity, and the number of process runs. Yes. So, regarding this point, what is important is that whatever the equipment you are using that is critical or important for your processing. Like, suppose I give you an example, if you are preparing any herbal extract. So, for this, you require a mechanical air dryer. You would be drying your herbal material. Then you would be requiring an extraction unit. So, these are your critical equipments. Okay. So, before you choose those important equipments, they should be well validated and qualified for use. They should be of good quality, and whatever the process you are following for the production, it should be validated in advance. So that actually regulates the quality of the regulates the quality of your herbal medicines. So, and whatever the production process you are following, so it should be reproducible. Now reproducible here means that आप जब भी हर बार कोई भी प्रोसेस से एक पर्टिकुलर प्रोसेस से अपना प्रोडक्ट बनाओगे, तो हर बैच पे वो सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, उसकी कॉम्पोजिशन में, उसकी क्वालिटी में, उसकी एफिकेसी में. सो इट शुड बी कंसिस्टेंट इन क्वालिटी. So your all the written procedure should be specified clearly. Whatever the critical process steps you are following, कि आपने कितने टाइम के लिए एक्सट्रैक्शन किया, कितने टेम्परेचर पे किया, आपने कौन से सॉल्वेंट्स यूज किए, उनकी प्योरिटी क्या थी, कितनी बार आपने एक्सट्रैक्शन किया, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस रन आपने किए. So all these things have to be maintained in the register, so that in every batch the consistency is attained. Okay, consistency in terms of quality, efficacy, and safety. So this is under the qualification and validation, both for the equipments, what are the critical equipments, and for the process. Okay, now third we comes to the complaints. Okay, now I'll ask someone else. Samriddhi Sinha. Samriddhi Sinha is there. Kumari Nishchala. Sahil. Sahil is there. Munmi Das. Munmi Das. Shikha Pandey. Shikha Pandey.
Yes, Rishit, ma'am. Shikha, are you there? Yes, ma'am. Okay. Yes. Can you see the slide? Three complaints. Hmm. Yes, ma'am. Should I read? Yes, yes. The person responsible for handling complaints and deciding on the measure to be taken to deal with them should have Hmm. appropriate training and or experience in specific feature of the quality control of herbal medicines. There are Hmm. basically two types of complaint: product quality complaints and adverse reaction events. The Hmm. first type of complaint may be caused by problems such as faulty manufacture, product defects, or deterioration in particular to herbal medicines or Hmm. adulteration of the herbal material. These complaints should be recorded in detail and causes thoroughly investigated. Example, by comparison with the reference samples kept from the same batch, Hmm. there should also be written procedure to describe the action to be taken. Okay. सो रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स नाउ कंप्लेंट्स से यहाँ पे क्या मतलब है जब भी आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी चीज का यहाँ पे इन केस यू आर प्रिपेयरिंग द हर्बल मेडिसिन सो देयर जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कंप्लेंट्स यू विल हैव टू फेस सो कंप्लेंट्स जो है दो तरीके की हो सकती हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट एंड रिगार्डिंग दी वट एवर सम एडवर्स रिएक्शंस और सम मिस हैपनिंग्स अगर okay so there is a separate unit should be maintained that should look after the complaints so the person who is responsible for handling these types of complaints and they only decide what are the measures or the safety measures to be taken okay so these people are should be adequately trained and experienced in handling the quality of the quality control of your herbal medicines okay now here about the first type of the complaint that is related to the product quality तो प्रोडक्ट क्वालिटी में कब कंप्लेंट प्रॉब्लम आ सकती है जैसे कोई अगर आपका फॉल्टी मैन्युफैक्चर हुआ है इफ देयर इज समथिंग डिफेक्ट इन योर प्रोडक्ट और इट हैज बीन डिटोरिएटेड particularly due to the growth of some fungal फंगल और माइक्रोबियल ग्रोथ ओके या फिर कोई एडल्ट्रेशन है आपके हर्बल मटेरियल में तो ऑल दीज थिंग्स they would adversely affect the product quality so these types of complaints they are generally recorded in detail एंड द केसेस की इसके बिहाइंड क्या प्रॉब्लम है क्या रीजन है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है तो द केस इज थॉरली इन्वेस्टिगेटेड एंड दिस इज डन बाय कंपेयरिंग विद योर स्टैंडर्ड सैंपल तो हर बैच में जब आप प्रोडक्शन करते हो तो एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है जो जिसके बेस पे आप ये कंपेयर करके कह सकते हो कि हाँ ये आपका सैंपल जो है इट इज ओके बिकॉज इट इज बीइंग it is same as your reference sample so you there so the reference sample is very important because it is a standard sample from where you will just compare the your product quality so all these written procedures are actually whatever the actions are taken by these complaint department they are thoroughly maintained in the document they are written procedures so that in case in the future also such complaints arise so the remedial action can be taken okay अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए किसी को भी तो you can ask me now we come to the second type of complaint okay now I'll ask Shikha Pandey yeah Shikha you only Yes, continue ma'am. reading yes read this also complaints to address the second type ये वाली भी पढ़नी है. हाँ ये वाली भी पढ़नी है can you see the slide To address second type of complaint, reports of any adverse reaction events should be entered in a separate register in accordance with national international requirements. Second, the investigation should be conducted to find out whether the adverse reaction or event is due to a quality problem or and whether such reaction events have already been reported in the literature or whether it is a new observation. Next, in either case, complaint records should be reviewed regularly to detect any specific or recurring problems requiring special attention and possible recall of marketed products. Next is the WHO guidelines on safety monitoring of herbal medicines in pharma
co-vigilance system deal with specific issues related to adverse reaction and adverse events following treatment with the herbal medicines. Yes, okay. So regarding the second complaint, that is actually related to the any adverse reaction. So it should be also maintained in a separate register. जो first type की complaint है उसके लिए separate register maintain होता है. इसके लिए there is another register, and there is a particular format and the protocol that has to be followed according to the national or international requirements. So the details of these, what are the guidelines are being followed in handling these type of complaints, they are actually given by the WHO, जिसमें जो है वो सेफ्टी मॉनिटरिंग के ऊपर, हर्बल मेडिसिन के ऊपर या फार्माकोविजिलेंस, कैसे आप उसके ऊपर अपनी मेडिसिन के ऊपर विजिलेंस रख सकते हो. तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं डिटेल में गाइडलाइंस इसकी मेंशन है WHO में, तो वो इतना डिटेल में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, बट सिर्फ इतना समझ लीजिए कि which is an investigation if this type of complaint is being faced by any in a manufacturing unit. So investigation is conducted कि क्या reason is found out कि why this adverse reaction has taken place. Either it is a quality problem or this type of the complaint or reaction जो है it has already been reported, पहले कभी ये report हुई है literature में, या it is a new observation. So these things have to be noted down and reviewed regularly. So उसका जो है फिर जो भी उसका remedial action है, it is being consulted from the WHO guidelines, and then the remedial action is taken to deal these type of complaints. Now the fourth is that the product recalls. Now actually there should be a standard operating procedure that in short we call as SOP for the storage of your herbal medicines. So what does it say कि आपका जो भी storage है वो जो है एक secure segregated separate environment में होना चाहिए, and that should also meet the WHO guidelines. Okay, तो इसके बारे में हम storage areas के बारे में हम आगे detail में पढ़ेंगे. Now comes the contract production and analysis. So contract production, Rishita Bansal. Rishita Bansal is there. Jyoti Chauhan. Yes, Jyoti. ma'am. Audible? Yes, Jyoti, you are audible. No, I'm Rishita. Yes? No, I'm Rishita, not Jyoti. Okay, Rishita. Yes, now I can see you. Okay. Can I read this slide? Yeah. Yes. Contract production and analysis. The contract partner should have adequate premises and equipment for the production of herbal medicines according to GMP. Validated methods should be applied for cleaning equipment and premises carefully before using them to produce different medicinal, food, or cosmetic products. In the case of raw materials used for producing food, it is realistic to require manufacturing departments to be separated from those where the plant raw material will be cut or powdered for use in the preparation of medicines. Okay. So here what is being told that where is your production or the manufacturing unit, so it should have an adequate premise or the space and all the critical equipments which are required for the production of herbal medicines. तो वो जो है आपके पास enough space होना चाहिए और वो सारे equipments होने चाहिए which is required for the production, and all your methods should be fully validated, and जो भी आप equipments या premise जहाँ पे भी आप अपना production carry out कर रहे हो, they should be cleaned. So before you use them to produce different types of the herbal medicinal products, or it can be related to food or any cosmetic products. तो जो भी आपका manufacturing department है, you have to ensure कि it should be separate from the area where your raw plant material is being handled out. एक तरफ तो आपका एरिया हो गया जहाँ पे आपने सीधा फील्ड से आपके पास रॉ हर्बल मटेरियल आया, जहाँ पे आपने उसको अनलोड किया, उसको आपने फिर सॉर्टिंग आउट किया, उसकी सैंड, सिल्ट, ग्रिट, स्टोन्स ये सब निकाल के देन यू कट इट आउट एंड पाउडर. सो दिस एरिया शुड बी एंटायर डिफरेंट and separated from your manufacturing unit जहाँ पे आप अपनी herbal medicines बना रहे हो. Because why it is necessary? क्योंकि नहीं तो क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस हैं.
Okay. Now the self inspection. So self inspection may there is at least one member of this, there is actually a self inspection team where that consists of the members that have a very good knowledge regarding the herbal medicines. So ये जो team है, from time to time it carries out the inspection and see that whether these guidelines are being followed related to the sanitation and hygiene in the processing or the manufacturing unit. Now personal में जो आता है, that is what is the manpower involved that is responsible for looking after your quality control that of your herbal product. तो इसकी जो गाइडलाइंस है that is same as we have read in the GAP guidelines. जो भी हमने वहाँ पे पर्सनल के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस थी, तो उसमें भी यही था सेम कि whatever the people who are or the staff you are involved in maintaining the quality control or your production of the herbal medicines, they should be fully experienced and should have an adequate knowledge and training, particularly in the field of processing and quality control of your herbal materials. Okay, तो इसमें ऐसे कुछ खास नहीं है. Then comes the personal hygiene. तो personal hygiene भी इसमें वही है same जो GAP guidelines में थी, but still I'll ask someone else to read it. शिखा पांडे है? शिखा पांडे? Yes, ma'am. Okay, Shikha. Can you see the slide? Yes, ma'am. Personal hygiene. Yes. Just read it out. Okay. So, personnel entrusted with the handling of herbal materials, herbal preparation, and finished herbal products should be required to have a high degree of personal hygiene and to receive adequate training in maintaining appropriate standards of hygiene. The personnel should not work if they have infectious disease or skin disease. Written procedure listing the basic hygiene requirements should be made available. Personnel should be protected from contact with toxic irritants and potentially allergenic plant materials by means of adequate protecting clothing. They should wear suitable gloves, caps, masks, work suits, and shoes throughout the whole procedure from plant processing to product manufacture. Okay, you can mute your mic now. So पर्सनल हाइजीन में वही है जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आपके वहाँ पे पीपल काम कर रहे हैं, जो मैन पावर इन्वॉल्व है, सो इट शुड हैव फॉलो अ स्ट्रिक्ट डिग्री ऑफ द पर्सनल हाइजीन. सो अगर आप उनमें कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है या स्किन डिजीज है दैट इज कॉन्टेजियस, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और इवन टू योर हर्बल प्रोडक्ट, सो ही शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क. और वहां पे जो है बेसिक हाइजीन रिक्वायरमेंट्स की एक पूरी प्रोसीजर की रिटन प्रोसीजर इट शुड बी अवेलेबल, ताकि जो भी वहां पे कोई काम कर रहा है तो ही शुड नो कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं दैट हैज टू बी फॉलोड रिगार्डिंग द हाइजीन. And whoever the people who are working, they should wear suitable gloves, caps, mask, जो भी उनका वर्क सूट है should wear, and the shoes throughout the whole production process. Okay, and they should be, इससे क्या होगा कि जो भी contact होगा उनका directly, either if there is any toxic irritant or कोई allergenic plant material है, so it should be avoided, it would be avoided. Then comes the training. नाउ जो भी पर्सन यहाँ पे काम कर रहे हैं तो दे शुड रिसीव एन एडिक्वेट ट्रेनिंग. तो कौन कौन से फील्ड्स हैं, लाइक फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में टेक्सोनोमिक बॉटनी, फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, हाइजीन, माइक्रोबायोलॉजी एंड दी अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स. जो भी हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें उनको प्रॉपरली एडिक्वेटली ट्रेन किया जाता है, एंड द ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन एंड देयर पीरियोडिक असाइनमेंट्स आर आल्सो गिवन टू एंश्योर कि जो है वो सही तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो रही है या नहीं. ठीक है, देयर इज नथिंग. Okay, now next comes the guidelines regarding the premises. Now premises actually the area where your production process is being carried out, production या processing जो भी आप कर रहे हो. Okay, now I ask someone else to read. Jyoti Chauhan, I think Jyoti has read. Sakshi is there. Sonu, Jyoti, have you read?
Good morning, ma'am. Ma'am, Yes, I haven't read, but it's not visible to me. Your screen is not visible to me. you can download it from the meeting chat. You can I'm using it from my mobile. I'll see if LMS is accessible to okay. it. Okay, in the meantime, I'll ask Soma Saraswati. Is she there? Soma? Sonu? Sonu is there? Sonu Jangir? Yes, ma'am. Sonu? Yes, ma'am. Okay. Sonu, you can just open your webcam and can you see this slide? Slide Yes, number 20. ma'am. Okay. Premises. Yeah. Yes, ma'am. Premises as a general principle, premises should be designed, located, constructed, adapted, and maintained to suit the operation to be carried out according to the GMP. Hmm. Storage areas. Hmm. Storage areas should be well organized and tidy. Hmm. Special attention should be paid to cleanliness and good maintenance. Hmm. And accidental spillage should be cleaned up immediately using method that minimize the risk of cross contamination of other material and should be reported. Hmm. The setup of storage areas depends on the type of materials stored. The Hmm. area should be well labeled. Different herbal materials should be stored in separate areas. Yes. So I think this is clear to all of you. There is nothing to explain much. जो भी आपका storage area, it should be well organized, tidy, neat and clean. Okay, and there should be no chances of cross contamination. तो कोई भी अगर आपका accidentally कुछ गिर भी जाता है तो it should be immediately cleaned. And the area should be well labeled कि कहाँ पे कौन सा material आपका store हुआ है, so that it is easy for you to carry out the further processing. Okay, just continue this also, storage areas. Yes, Sonu. Yes, ma'am. Storage areas. Storage areas should be laid out to permit effective and orderly segregation of the various categories of material stored and to allow rotation of stock. Hmm. To protect the stored material and reduce the risk of pest attacks, the duration of storage of any herbal material in unpacked form should be kept to a minimum. Hmm. Incoming fresh herbal material should be processed unless specified otherwise as soon as possible. If Hmm. appropriate, they should be stored between 2 degrees Celsius and 8 degrees Celsius, where Hmm. frozen material should be stored below minus 18 degrees Celsius. Okay, you can mute your mic now. सो स्टोरेज एरियाज में इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है, एक तो कि आपका सेग्रीगेशन, आपका जो भी अलग अलग कैटेगरीज का हर्बल मटेरियल लेके, जैसे सपोज एक आप प्लांट का या आप रूट्स यूज कर रहे हो, सपोज अश्वगंधा एलोवेरा का आप जेल यूज कर रहे हो, लीव्स हैं, तो दे शुड बी प्रॉपरली सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, हर्बल मटेरियल्स। और आपका स्टोरेज इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो है रोटेशन हो सके स्टॉक का, तो दैट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपका स्टॉक पहले आया है उसको आप पहले बाहर लेके जाओगे फॉर द प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में फीफो बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और जो भी स्टोरेज एरिया है आपको ये उसमें यू हैव टू इंश्योर इट कि वहां पे कोई भी पेस्ट अटैक का डेंजर या ना हो। ओके, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर herbal raw material from the pest or the rodents attack. Okay, and the storage, the whatever the duration of the storage is, जो आप कोई भी अनपैक्ड मटेरियल को आपको स्टोर करके नहीं रखना है, इट शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम। जो भी आप हर्बल रॉ मटेरियल स्टोर कर रहे हो, इट शुड बी फर्स्ट पैक्ड अकॉर्डिंगली और तब उसको आपको स्टोर करना है। ओपन मटेरियल आपको ऐसे स्टोरेज एरियाज में नहीं रखना है। ठीक है, और अगर आपका कोई भी फ्रेश हर्बल मटेरियल है तो अगर उसको आप if you want if it is required कि it should be stored at a low temperature, तो ये जो appropriate temperature है that is generally stored between 2 to 8 degrees Celsius। और अगर उसमें ज्यादा frozen material है तो it can be stored at minus 18 degrees Celsius। So you should remember the temperature of the storage areas also if it's being asked. Okay, I'll ask someone else. So after Sonu,
Soma Saraswati. Soma. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Soma, you read this. Can you see this slide? Slide number 24. Yes, ma'am. Slide Okay. number 24, storage area. Just a second. What happened? Soma? Hello? Yeah, ma'am. Storage area where the materials are stored in a bulk to reduce the risk of molds formation and fermentation. It is advisable to store them in a aerated room and container. Use natural and mechanical Aeration and aeration and ventilation. These areas should be also equipped in a Your voice Hello. is being loud and it's being cracking. Okay, Soma, so you just mute your mic. I'll ask someone else. Milli Rani? Milli Rani is there? Aman Jain? Aman? Yes, ma'am. Who's there? Yes, ma'am. Storage areas Yes, Aman. Yes, read it. where materials are stored in bulk to reduce the risk of mold formation or fermentation. It is advisable to store them in aerated rooms or containers using natural or mechanical aeration and ventilation. These areas should be equipped in such a way to protect against the entry of insects or animals, especially rodents. Effective measures should be taken to limit the spread of animals and microorganisms brought in with the plant material and to prevent cross contamination. Herbal materials, even when stored in fiber drums, bags, or boxes, should be stored off the floor and suitably spaced to permit cleaning and inspection. Okay, so I think this is clear. There is nothing to explain much about. This is regarding the points we have already discussed कि वहाँ पे provision होना चाहिए कि आपका कोई भी insects, animals, rodents वगैरह का attack ना हो सके. Plus उसमें जो भी आप store कर रहे हो अपना herbal material, तो it should not be put directly onto the floor. एक space होना चाहिए between the floor and your stacks, ताकि आप वहाँ पे easily clean कर सको और it should be spaced also. There should be space ताकि आपका air circulation बना रहे और ventilation बना रहे और वहाँ पे risk mold formation or fermentation का ना हो. Okay, continue this also regarding the storage. The storage of plants, extracts, tinctures, and other preparations may require special conditions of humidity and temperature or protection from light. Appropriate steps should be taken to ensure that these conditions are provided, maintained, monitored, and recorded. Herbal materials, including raw herbal materials, should be kept in a dry area, protected from moisture, and processed following the principle of first in, first out. FIFO. Okay, Aman. You can mute your mic. So that I was telling you, you have to process the material using the principle of FIFO. That is the first in first out. मतलब जो आपका raw material, herbal material first आया है storage area में, उसको आप सबसे पहले निकाल के लेके जाओगे for the further processing. ठीक है, ताकि उसकी expiry के ना हो. नहीं तो वो पहले अगर आपने जो बाद में मटेरियल आया है और उसको आप पहले ले गए और जो पहले का रखा हुआ है वो आपका बहुत दिनों तक रखा है तो वो वहां पे खराब होने के चांसेस है. सो FIFO principle of FIFO is being followed. Okay, now the next is the GMP guidelines according to the production areas. Okay, Jyoti Malik is there. Tanveer Khan. Ma'am, Jyoti texted me her mic is not working. Okay. Tanveer Khan is there. Vineet Vishal. Vineet Vishal. Kenna. Kenna Yes, is ma'am. there. Yes, ma'am. Okay.
You can read this, production areas. Okay, ma'am. Production areas should comply with the general requirements of GMP. When heating or boiling materials is necessary, a suitable air exhaust mechanism should be employed to prevent accumulation of fumes and vapors. To facilitate cleaning and to avoid cross-contamination, adequate precaution should be taken during the sampling, weighing, mixing and processing of medicinal plants. Yes. So प्रोडक्शन एरियाज में ये जनरल सी चीजें हैं कि अगर वहां पर आपका हीटिंग या बॉइलिंग जो है चलता है प्रोसेसिंग में, if it is necessary, there should be a proper air exhaust mechanism should be there, a ventilation should be there, otherwise your fumes and vapors would be accumulated. And precaution should also be taken during your sampling, weighing, mixing and processing, ताकि आपका cross contamination ना हो. Okay, now coming to the equipment requirement. Okay, you can continue reading this also. Equipment. Okay, ma'am. Processing of herbal materials may generate dust or materials which is susceptible to pest infestation or microbiological contamination and cross-contamination. Cleaning of the equipment is therefore particularly important. Vacuum or wet cleaning methods are preferred. If wet cleaning is done, the equipment should be dried immediately after cleaning to prevent the growth of microorganisms. Cleaning with compressed and brushes should be used with care and avoided if possible, as this method increases the risk of product contamination. Okay, okay. You can mute your mic now. So equipment जो भी आप use कर रहे हो तो उसमें भी आपको you have to ensure कि that should be effectively cleaned. ठीक है, तो दो मेथड इसमें सजेस्ट किए गए हैं, या तो वैक्यूम क्लीनिंग कर सकते हैं आप या फिर वेट क्लीनिंग. तो वेट क्लीनिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो you have to ensure कि after the cleaning the equipment should be dried immediately. Otherwise जहाँ पे भी थोड़ी बहुत moisture available होगी, so that would also favor the growth of the microorganisms. So the other method is you can use the compressed air and with the help of the brushes you can just clean it. But इसमें एक ये risk है कि इसकी वजह से cross contamination हो सकता है कि जो भी आप brushes से अगर आप कोई भी use कर रहे हो तो dust आपकी या contamination आपका इधर उधर जा सकता है. So it increases the risk of product contamination. Okay, now I'll ask someone else after Kenna. Anjali Anil. Anjali Anil. Amrita Gupta. Amrita Gupta. Reema Chauhan. Present, ma'am. Who said? Yes, Speak ma'am. out. Yes. You speak out your name. You are? Ma'am, Reema. Okay, Reema. Yes, now I can see you. Okay, Reema, just read this slide. Can you see this slide? Yes, ma'am. Equipment. Non-wooden equipment should not be used unless tradition demands wooden material. Where it is necessary to use the traditional equipments such as wooden implements, clay pots, pallets, hoppers, etc. It is advisable that it does not come into direct contact with chemicals or contaminated material. If the use of the wooden equipment is unavoidable, special consideration must be given to its cleaning, as wooden materials may retain odors, be easily discolored, and are easily contaminated. Okay, this is regarding the guidelines कि अगर आप कोई भी wooden equipment use कर रहे हो, पहले तो ये है कि non wooden equipment is wooden equipment should not be used unless and until it is very important, because उसके साथ क्या disadvantages हैं, क्योंकि it can retain the odor also, और वो effectively it can't be cleaned and it is easily discolored and contaminated. But still, if we are using it, then you have to take special precautions that it does not come into directly in contact with any contaminated material or any undesirable chemicals. Okay, just continue reading this also. Materials. Materials. All incoming herbal materials should be quarantined and stored under appropriate conditions that take into account the degradability of herbal materials and herbal preparations. Only permitted substances should be used for fumigation, and allowable limits for their residues together with specifications for the apparatus used
should be set according to the national regulations. Okay, Rima, you can mute your mic now. So whatever the materials, if you are in the storage area, whatever the herbal materials you are using, so it should be stored under appropriate conditions that we have already discussed. And if there is a problem of any fungal infection, or if there is a use arise, कोई भी fungicide use करना है, तो first thing is that it should be only permitted substances should be used for the fumigation, and that also within the prescribed limit. So it should not exceed beyond that, because otherwise their pesticide or residues problem would arise. So it should be used only under the strict supervision according to the national regulations which has been set up for that. Okay, now comes your reference samples and standards. Amisha Singh. Amisha Singh is there. Aditi Pandey. Aditi Pandey. Avantika Yadav. Yes, ma'am. Avantika. Okay, Avantika. Yes. Reference samples and the standards. The reference standard for a herbal medicine may be a botanical sample of the herbal material, a sample of the herbal preparation, example extract, or chemically defined substance, example a known active constituent, a marker substance, or a known impurity. The reference standard should be of a quality appropriate to its purpose. If the herbal medicine is not described in a recognized pharmacopoeia, a herbarium sample of the flowering or fruiting top of the whole medicinal plant or part of the medicinal plant, example if the whole medicinal plant is a tree, should be available. All the reference standards should be stored under appropriate conditions to prevent degradation. Their expiry or revalidation date should be determined and indicated. Okay, you can mute your mic now. So the what is the importance of the reference samples and the standards? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि reference कोई भी आप extraction process या preparation processing कर रहे हो, तो उसके साथ आप suppose आप कोई medicine बना रहे हो, like for take an example, आप anti cancer कोई medicine बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने कोई भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपने निकाला, सपोज एक प्लांट है सदाबहार, वो उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो आपने उसकी लीव्स में से एंटी कैंसर कंपाउंड निकाल लिया, तो आप जब कंपाउंड निकालोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका यही असली में इट्स अ ट्रू कंपाउंड। सो उसके लिए आपको एक रेफरेंस सैंपल या स्टैंडर्ड होना जरूरी है। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो अपनी क्लास में, यू मस्ट हैव सीन कि यू गेट अ स्टैंडर्ड रेफरेंस सैंपल, ओके, और अ स्टैंडर्ड, ताकि आप उससे कंपेयर कर सको कि इफ योर द मटेरियल दैट यू हैव एक्सट्रैक्टेड इज जेन्युइन और नॉट, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी आप रेफरेंस सैंपल आपके पास है, इट शुड बी ऑफ good quality, it should have all the active known active constituents. It can be any active constituent हो सकता है या फिर कोई भी particular वो ट्री का पार्ट हो सकता है। अगर आप उसका प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करें, सपोज आप रूट्स ले रहे हो किसी भी प्लांट की, तो आपके पास सपोज फॉर एग्जांपल अश्वगंधा की आप रूट्स ले रहे हो, तो आपके पास एक जेन्युइन अश्वगंधा की रूट होनी चाहिए जो आपको पता है कि ये अश्वगंधा है, तो उससे आप कंपेयर करोगे अपने सैंपल को, कि रेफरेंस स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे कि हाँ ये इसमें ऐसी रूट्स हैं, तो ये भी सेम है, अश्वगंधा ही है। इस तरीके से यू हैव टू जस्ट इंश्योर कि जो भी आप रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो उसको आपको यू हैव टू स्टोर इट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, ताकि उसका डिग्रेडेशन ना हो, एंड देयर एक्सपायरी और दी रीवैलिडेशन, मतलब जो भी एक्सपायरी डेट है उसकी, वो भी इंडिकेट करनी है कि उसके बाद वो जो आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो इट इज एक्सपायर्ड एंड इट इज नॉट फिट फॉर यूज। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मेंशन्ड। और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है रेफरेंस स्टैंडर्ड्स की, if it is also being described in these pharmacopoeias or herbariums, वहां पे ये आपको इसमें फुल डिटेल में the information is being obtained, you can take. Now next is the documentation. अब documentation में क्या आता है कि जो भी आपने procedure follow करो, it is thoroughly being recorded and described in the separate register. अब डॉक्यूमेंटेशन में पहला क्या आता है, हर्बल मटेरियल। तो आप जो भी प्लांट का या लेके चल रहे हो, तो उसकी आपको फैमिली पता होनी चाहिए, बोटेनिकल नेम पता होना चाहिए, कौन सी क्लास का है, जीनस, स्पीशीज, वैरायटी, सो ऑल दीज, और उसका कॉमन नेम, वर्नैकुलर नेम इज द
कॉमन नेम और उसका क्या थेरेपेटिक यूज है, किस चीज के लिए वो यूज होता है, कहाँ से, कौन से कंट्री से या रीजन से वो प्लांट बिलोंग करता है. तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर. एंड डिटेल्स ऑफ द सोर्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम वेयर द कंट्री, इन विच रीजन और स्टेट, आपने कौन से सिटी से वो आपने प्रोक्योर किया है, वेदर इट इज कल्टिवेटेड या फिर वो वाइल्ड से आपने कलेक्ट किया है, and what was the method of cultivation that was followed, what was the date and the conditions of harvesting. ठीक है, कलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कितना क्वांटिटी में आपने कलेक्ट किया है, कितना आपने किस स्टेट पे पेस्टिसाइड अप्लाई किया है. तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में यू हैव टू जस्ट डॉक्यूमेंट इट, मेंटेन इट इन द रजिस्टर. नाउ डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग टू योर सॉरी, दिस इज अबाउट द हर्बल मटेरियल. अब हर्बल मटेरियल आपका फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो उससे रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है, उसकी क्वालिटी आप कैसे चेक करोगे, वो आप इसमें अब देखोगे. सो नाउ आई विल आस्क समवन एल्स. कोमल इज देयर? काजल पांडे? यस मैम. काजल और कोमल? यस मैम. काजल मैम. Just read the slide, Kajal. Yeah, okay ma'am. Whether the whole plant or only a part is used. In the latter case, which part of the plant is used and its state. Example, whole or reduced. For dried plant material, the drying system should be specified if applicable. A description of the plant material based on visual, that is macroscopic or microscopic examination. Suitable identity test including, where appropriate, identification test such as TLC or other chromatographic fingerprint for non-active ingredients or markers. A reference sample should be available for identification purposes. Details of the assay where appropriate of active constituents or markers. Limit tests such as dry residue of liquids, ash value, total ash, and ash insoluble in hydrochloric acid, water-soluble extractives, moisture or water content, and loss on drying. This taking into account the presence of essential oils, if any. Okay, so here what is being mentioned ki whether what is your whole plant or your only a part plant is used. ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप पूरा ही प्लांट यूज कर रहे हो आप हर्बल मेडिसिन बनाने के लिए, या फिर उसका कोई पार्ट यूज कर रहे हो. दैट कैन बी रूट्स, इट्स लीव्स, इट्स बार्क, इट्स फ्लावर्स. ओके, सो अगर आप पार्ट यूज कर रहे हो तो यू हैव टू एंश्योर कि जो भी ड्राइड प्लांट मटेरियल है, तो ड्राइंग सिस्टम यू हैव टू मेंशन इट कि कितने टेम्परेचर पे आपने ड्राई किया है. ठीक है, उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन देना है प्लांट मटेरियल का बेस्ड ऑन योर विजुअल इंस्पेक्शन. आप थ्रू अनएडेड आई आपको कैसे वो प्लांट दिखाई दे रहा है, उसकी लीव्स कैसी हैं, फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है, यू हैव टू डिस्क्राइब दैट प्लांट प्लस अलोंग विद द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. इसके अलावा there are suitable identity quality tests are also done for the identification and confirmation of the active constituents. तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं लाइक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, या फिर बहुत सारी अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं लाइक HPLC है, HPTLC है, GLC है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है. So for after using these identification tests, you are able to identify the एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स या उसमें कौन सा आपका इंग्रेडिएंट है और कितनी क्वांटिटी में है, वो भी आप उसको यू कैन जस्ट डिटरमाइन इट. एंड इसके साथ जब आप ये सब कर रहे हो टेस्ट, तो एक रेफरेंस सैंपल इट्स बीइंग रिक्वायर्ड, ताकि आप उससे कोरिलेट कर सको कि जो आपने निकाला है अपना, वो सही में जेन्युइनली वो मटेरियल है या नहीं है. ठीक है, तो इसमें फिर अलग से ये टेस्ट दिए गए हैं. अदर टेस्ट आर आल्सो बीइंग डन फॉर द क्वालिटी, for checking the quality, like the dry residue of liquids, what is the ash value, total ash, ash insoluble in hydrochloric acid. So these are actually the tests that you would be studying. There is आपके syllabus में एक separate topic है for the quality control and the value addition. तो उसमें ये हम test कैसे हम ये monitor करते हैं, determine करते हैं, टोटल एश कैसे निकालते हैं, ये सब मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालते हैं, तो वो हम देखेंगे उसमें. ठीक है, अभी सिर्फ इसमें इसके नाम आप देख लीजिए. Then comes your herbal materials. Okay, I'll ask someone else now. Maman is there? Sunidhi Kasna? Payal Priya? Yes, ma'am, I'm here. Ma'am, Payal Priya.
Speak out, Payal. Okay, Payal. I'm Sunidhi's Okay, your voice is echoing, Payal. No, ma'am, it's not me, it's Sunidhi, I guess. Okay, okay, okay. Yes, Payal, we can hear you. Okay. Herbal materials. Suitable method for the determination of possible pesticide contamination and the acceptable limits for such contamination in herbal materials or herbal preparations used in manufacture of herbal medicine. Test for toxic metals and for likely contaminants, foreign materials and adulterants. Test for fungal and or microbiological contamination, fumigant residues if applicable, mycotoxins, pest infestations, radioactivity and their acceptable limits. ठीक है, तो इसमें जो है टेस्ट बताए गए हैं हर्बल मटेरियल के फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी। तो अगर आप उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह अगर यूज हुए हैं या फ्यूमिगेंट्स यूज हुए हैं तो उस पे रेजिड्यू लेवल कितना है, तो वो सब भी इट इज नेसेसरी टू जस्ट मेजर देम। देन फंगल कंटामिनेशन तो नहीं है, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन नहीं है, आपके फिनिश जो हर्बल प्रोडक्ट है उसके बारे में ये बात हो रही है। तो उसमें जो है कोई भी टॉक्सिक मेटल नहीं होना चाहिए, कोई भी फॉरेन मटेरियल या एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। mycotoxins, you know what are mycotoxins? Anybody? किसी को पता है mycotoxins के बारे में क्या होते हैं ये? No? Toxins released by fungi. Yes, yes. Yes, myco means fungus and toxins. So these are actually the toxins which are produced by the fungus, especially the Aspergillus species. Okay, तो वो present नहीं होना चाहिए because these are actually the neurotoxins. They affect the nervous system. So these are very injurious for health. और कोई भी pest infestation नहीं होना चाहिए, उसमें radioactivity level तो उनके एक एक्सेप्टेबल लिमिट दिए गए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आपके यहाँ सेपरेट टॉपिक है जैसे मैंने बताया क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें कितना लेवल है वो उसमें देखेंगे हम। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट जो है हर्बल मटेरियल जो आपका फिनिश हर्बल प्रोडक्ट है उसके साथ कैरी होता है। ठीक है, देन ओके, जस्ट कंटिन्यू रीडिंग दिस आल्सो। Okay, ma'am. If the herbal material for processing does not comply with its quality specification, the rules that apply for its rejection and to storage and disposal of the rejected herbal material should be included. Starting material derived from or comprising genetically modified organism should comply with existing national or international regulations, and the label should include this information. Chemical protection of herbal materials should be in accordance with the national or international regulations. Qualitative and quantitative information of the active ingredients or the constituent with known therapeutic activities in herbal material and herbal preparation should be given as described. Okay. So this is again कि आपका जो भी herbal material है it should comply according to the national and international standards जो laid out है by the WHO. And अगर आपका कोई भी herbal material उसमें कोई GMO है, genetically modified है तो वो भी आपको label पे आपको you have to mention it this information. And कोई भी आपकी qualitative या quantitative उसमें कितनी चीजें हैं, ठीक है, अगर आपने कोई भी सपोज हर्बल कफ सिरप बनाया तो उसमें 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स अगर आपने यूज किए हैं तो उसके नेम्स जो भी आपने हर्बल मटेरियल्स में ऐड किया है प्लस उनकी क्वांटिटी, तो वो आपको उसमें मेंशन करना, इट्स बीइंग इम्पोर्टेंट। एंड यू कैन आल्सो मेंशन दी व्हाट इज दिस बीइंग यूज्ड फॉर, कि अगर कोई उसकी क्या थेरेपेटिक एक्टिविटी, इट इज फॉर कफ कोल्ड, सो इट शुड बी मेंशन दैट आल्सो इन द लेबलिंग। Okay, now this is about the finished herbal products. Okay, just finished reading this also. This is the last slide. Okay, ma'am. Finished herbal products. Test for microbiological contamination and test for other toxicants. Uniformity weight, for example, for tablets, single doses, powders, capsules, and herbal tea in sachet. Disintegration time for tablets, capsules, and pills. Hardness and friability, for example, Yes. For example, uncoated tablets. Viscosity for internal and external fluids. Consistency, semi-solid preparation, and dissolution, tablets or capsules, if applicable. Physical appearance such as color, odor, form, shape, size, and texture. Loss on drying or water content.
identity test, qualitative determination of relevant substances of the plants, for example, fingerprint chromatograms, quantification of relevant active ingredients if they have been identified, and the analytical methods that are available. Okay, you can mute your mic now, Payal. So finished herbal products में वही ये कंटिन्यूएशन में है जो पहली स्लाइड थी कि क्या क्या क्वालिटी टेस्ट होने चाहिए आपका जो आप फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन वो हमने देख लिया है पहले, या फिर कोई भी टॉक्सिकेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग टेस्ट के अलावा अगर आपका इफ योर हर्बल प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट, ठीक है, या फिर आप पाउडर के फॉर्म में उसको दे रहे हैं, या फिर कैप्सूल, या फिर कोई हर्बल टी आप बना रहे हैं सैशेज में, तो उसको आपको क्या इंश्योर करना है कि दे शुड बी यूनिफॉर्म इन वेट, मतलब जितनी भी टैबलेट्स हैं या कैप्सूल्स हैं उनका वेट यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर उसका तो कैप्सूल का 1 ग्राम है, दूसरी का 1.2 ग्राम है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट आपको चेक करना है फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स का। देन डिसइंटीग्रेशन टाइम, कि कितने टाइम में वो डिसइंटीग्रेट हो रही है टैबलेट्स, कैप्सूल्स और पिल्स के केसेस में, ठीक है। देन द थर्ड इज द हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी, कितनी ज्यादा हार्ड है आपकी टैबलेट, जो भी अनकोटेड है तो वो भी आपको चेक करनी है, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर मशीन आती है। सो एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ द ड्रग डिस्कवरी, ये जो सारे चीजें आप देख रहे हो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट एरिया। फ्राइबिलिटी कि कितनी इजिली वो टूट जाती है आपकी, ठीक है, तो वो भी आपको एक पर्टिकुलर उसकी लिमिट होती है। सो इट शुड बी दैट योर टैबलेट शुड बी सो मच ऑफ हार्ड एंड इतनी फ्राइबल होनी चाहिए। देन विस्कोसिटी आती है, अगर आप फ्लूइड्स या सिरप्स वगैरह में यूज कर रहे हो, कितने विस्कस है, कितना थिक है, कंसिस्टेंसी उसकी कितनी है। डिसोल्यूशन फिर अगेन टैबलेट्स और कैप्सूल्स में आती है कि कितनी जल्दी आपका जब वो इंटरनली आपकी बॉडी में जाती है कितना टाइम लेती है डिसॉल्व होने में बॉडी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड फॉर दी फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स। देन फिजिकल अपीयरेंस is required to check कि color उसका कैसा है, order, form, shape, size, texture. So all this comes under the physical appearance. So it should be uniform throughout your batches. Then उसमें कोई loss तो नहीं हो रहा है drying के time पे, या water content उसका during the storage आपका कोई उसमें चेंज तो नहीं हो रहा है। देन आइडेंटिटी टेस्ट जो हमने पहले डिस्क्राइब किया था कि डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, कौन से हैं और कितनी अमाउंट में है। तो बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, so these are all being used by using the analytical method। जो भी आपके क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, sophisticated instruments through which you can just determine them। so these are about the GMP guidelines, ठीक है। तो इसके साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से I'll start with the another topic। So in the meantime, this is very important from the examination of point of view also, GAP and GMP guidelines. So you read them, and if you find any difficulty, then you can ask me in my next class. Okay, students? Now you can leave it. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.